Plants are made up of cells. Cells together form tissue, which joins to form an organ. The organs of plants include vegetative parts such as roots, stems and leaves, and reproductive parts such as flowers, fruits and seeds. The growth of plants takes place in two stages, namely vegetative and reproductive. हाँ लिखो lateral का The मतलब vegetative stage involves the growth of the plant from a seed to the lateral flowering का meaning stage, लिखो girth और width. whereas the reproductive stage girth is the period और from flowering width. till समझ they आया produce meaning? offspring. girth के spelling आते हैं During the vegetative stage, the organs of the plant grow in size and number I R and T H result in girth a कहते हैं mature बच्चे plant with complex body organization. इसको। लिख लिया This development किसका of a meaning चाहिए mature हमें? plant involves two adventitious का meaning चाहिए processes, लिखो बच्चे growth adventitious का and differentiation. adventitious का Now, मतलब होता है let's लिखो define लिख रहे हो growth. any plant Growth is an part important characteristic that is easily observed in all any living organisms. plant part It's a arising from permanent the stem. increase in the size of an individual cell in a adventitious plant. का मतलब होता है जिससे It any requires any energy मत लिखो roots लिखो बच्चे roots लिखो and hence accompanies roots anabolism and shoots लिखो and roots and catabolism. shoots arising from In stem plants, growth is is called as unlimited adventitious. and hence adventitious when adventitious they roots जैसे retain हम the बोलते capacity हैं to grow throughout their lifespan. adventitious shoot formation means This is कभी भी जब attributed भी to the कोई भी presence of part जो है meristems stem से at निकले specific then that locations is known in as them. adventitious. Meristems are cells that have the capacity to divide, which समझ आई ये add new बात cells to ठीक the है plant लिख body. लिया any part arising from the stem This part addition of new cells by जैसे बहुत meristems कॉमन हम वर्ड is यूज करते called हैं पता नहीं आपको open याद form है of कि growth. नहीं हमने जब टेरिडोफाइट्स पढ़े थे तो मैंने आपको समझाया था वहां पे एडवेंटिशियस Meristems रूट से are of two राइजोम types, करके था एक वर्ड namely आई डोंट नो यू apical रिमेम्बर इट और नॉट and तो उसमें lateral जो था meristem. it is the adventitious part Apical that is meristems responsible are for what located it at the is root tips responsible for and shoot tips of the all new plants. ठीक है फिर नेक्स्ट आ जाओ इसमें मैं आपको एक लाइन लिखवाने वाली They हूँ are दे हेल्प responsible टू for the ओवरकम primary द growth of the एपिकल plant, डोमिनेंस इसके that आगे is, लिखो जरा elongation of shall the I plant dictate along its axis. shall I dictate बच्चे हाँ Lateral meristems such as लिखो vascular cambium and cork the cambium are auxine present in woody plants. इसी के आगे लिखो एक लाइन the auxine is present in They the are shoot responsible tip for the secondary growth of the plant, which causes an increase in the auxine girth is of plant present in the parts shoot such tip as the stem and branches. and cytokinin Now, is present in let's see if we the can measure growth. and At the cellular level, cytokinin is growth present in refers to the an increase in the amount of protoplasm, which is difficult to measure. lateral buds Hence, growth is measured by different lateral parameters such as size, buds area, full length, stop and the number. removal of shoot tip For example, watermelon the cells removal of increase shoot up to tip 350,000 times, and hence the growth here is measured in size. promotes removal of In the case shoot of Vittoria tip regia, promotes a leaf, growth is lateral measured bud as an growth increase in due to surface area, cytokinin. whereas the growth of the pollen tube is measured in length. Similarly, lateral the root apical meristem bud of maize growth results किसकी in वजह से हो रही है बच्चे 17,500 new किसकी cells वजह per से हो रही है hour, and cytokinin hence की वजह से growth हो रही है here क्लियर is है ये measured in number. समझ आया Yes. नेक्स्ट पे चले Now, तो let's look at the different it is phases of helping to growth. overcome the apical dominance अब हम नेक्स्ट पे The चल रहे different हैं phases of growth are zone of अब आ जाओ division, next elongation, plant hormone and that is the fourth maturation. plant hormone that is the
The zone ये of क्या division कहते हैं contains the rapidly ईथलीन। dividing बड़ा cells इंटरेस्टिंग है, of पहले मैं इसकी छोटी meristems. सी एक स्टोरी सुना दूं। और आपने देखा हुआ है These ये cells are फ्रूट वेंडर्स को ये characterized by काम rich करते हुए। क्या protoplasm, था ना कि large nuclei, and a क्या thin हुआ था कि primary दे cell वर wall लुकिंग with फॉर एन, more देखो अभी तक जितने भी plasmodesmatal हार्मोन्स हमने openings. पढ़े, ऑक्सीन पढ़ा, जिबरेलिन पढ़ा, साइटोकाइनिन पढ़ा, The zone of दे आर ऑल elongation प्रमोटर्स lies next to कैटेगरी, मतलब meristematic ग्रोथ को tissues. प्रमोट कर रहे हैं, सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहे हैं। तो देन These द cells साइंटिस्ट are थॉट कि ये characterized सारा by कुछ तो enlarged ग्रोथ ही हो रहा cells, है, ग्रोथ ही हो रहा है, deposition एनॉर्मस of a ग्रोथ new होती cell जा रही है, wall, देयर मस्ट बी a thin समथिंग cytoplasmic that is layer, also a coming large under the vacuole, category of inhibitors and a also। nucleus. तो इथिलीन जो है एक इनहिबिटर की कैटेगरी में आता है। तो इस तरीके से Maturation इसकी growth डिस्कवरी is हुई seen थी। on the सेकंड cells next to इम्पोर्टेंट वे जो elongation डिस्कवर tissues. किया गया था ना इसको, वो डिस्कवर किया गया था These कि cells are यू characterized by mature नो cells इट वाज that फाउंड have हु reached इज maximum रिस्पांसिबल size फॉर in दिस terms of cell राइपनिंग। wall thickening जब हम and राइपनिंग ऑफ protoplasm. फ्रूट्स की बात करते हैं तो राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स जो We है, know that a plant's मतलब growth फ्रूट्स का रॉ से राइपन होना, ताकि आप राइपन comprises फ्रूट्स cell खाते हो, बनाना division, हो गया, मैंगो हो cell गया, एप्पल हो गया, enlargement, व्हाटएवर, and यू cell प्रेफर टू टेक differentiation. राइपन फ्रूट्स। सो जो When ये growth is राइपन measured फ्रूट्स हैं, per ये कौन unit किसकी time, वजह से राइपनिंग it is प्रोसेस हो called रहा है? growth ईथिलीन की rate. वजह से। एंड इट इज अ वेरी कॉमन फिनोमेना दैट इज बीन डन बाय द If we consider the फ्रूट increase in वेंडर्स, cell number as growth, दैट द it can be the result of arithmetic or दे geometric growth. यूजुअली जितने भी रॉ फ्रूट्स होते हैं उनको Arithmetic वो growth refers to the न्यूज़पेपर्स division of one के daughter अंदर cell रखते हैं। पपाया obtained को देखा during होगा mitosis, कॉमनली आपने, आजकल पपाया को while रखते the हैं। other और कभी daughter कभी cell ये जितने भी enlarges हस्क and में आते हैं differentiates. आपके पैक होके आते हैं, ठीक है। सो An क्या example of होता है कि arithmetic दे आर growth एक्चुअली is the रिस्पॉन्सिबल elongation of the फॉर root. राइपनिंग, और ये गैसियस हार्मोन है एंड इट इज Here, बेसिकली let's plot a रिस्पॉन्सिबल graph फॉर to द determine the growth rate राइपनिंग of ऑफ a द root. फ्रूट्स। तो जब हम न्यूज़पेपर के फोल्ड में रखते हैं ना, तो Let's न्यूज़पेपर take के the फोल्ड length में of the क्यों root रखा है on the हमने y-axis पपाया को? and the time taken इसलिए for रखा है growth कि on जो the x-axis हार्मोन है वो and एस्केप plot ना a हो जाए graph. एनवायरनमेंट में। अगर हार्मोन एस्केप हो जाएगा A एनवायरनमेंट में, linear तो देन curve is obtained for देयर विल बी arithmetic नो growth. राइपनिंग। तो This is न्यूज़पेपर due में to the रखते हैं ताकि continuous जो गैसियस addition of हार्मोन new है वो cells at the कन्फाइंड root रहे tips. और न्यूज़पेपर में, और वो राइपनिंग करे, और फिर हम जो है Arithmetic growth can be expressed उसको mathematically रिमूव कर as देते हैं वहां से। और कभी LT कभी अगर फ्रूट equals राइपनिंग करनी भी है तो L0 एक सड़ा हुआ plus केला ले लीजिए, RT, रॉटन, बिकॉज रॉटन जो होगा वो बहुत ज्यादा where इथिलीन प्रोड्यूस करता है, LT राइपनिंग प्रोड्यूस equals करता है, length of the root at और time उसकी वजह t, से जो है इट इज L0 रिस्पॉन्सिबल। इज इट equals क्लियर? length of the समझ आया? root at सो इट इज time अ 0, गैसियस हार्मोन। and सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, RT इट इज अ equals गैसियस